थोड़ा सा चल देंगे. Mike. So congratulations on making something this amazing happen, for having that vision to create something for the first time in India. I'm sure it's very gutsy that way, to think that let's make an MMA series. I would like to know, where did all of this start from? Yeah, firstly, thank you for having me here. MX players extremely proud to be associated with a show like this. आई थिंक ये कहानी शायद 1.5 या 2 साल पहले शुरू हुई थी. 3 साल पहले शुरू हुई. ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये 3 साल की मेहनत है. ये एक शो आइडिया अली भाई का था, एंड जब इन लोगों ने हमें कॉन्सेप्ट सुनाया, आई जस्ट थॉट दैट ऐसे शो को जस्टिस देने के लिए एमएक्स प्लेयर से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है. Agreed, absolutely. एंड गिवन हमारा जो शेयर साइज ऑफ यूजर्स हैं इंडिया में एंड ग्लोबली, एंड आई मस्ट टेल यू that this show is not going to be only in India, but it's going to be in 55 countries globally. Wow. So ये शो को जितना ज़्यादा रीच और जितने ज़्यादा लोग देख सके, and that is predominantly just to fulfill the dream that Ali Bhai has, and not just that, but to give all the fighters the due credit for all the effort and for all the work that they have done, is something that we took upon us as MX player to envisage. And of course, after the entry of Anna, who blessed this momentous show for us, उस पे तो 4 चांद लगे ही. बट आई थिंक प्रोमो में जैसे आपने देखा, दैट इट जस्ट क्रिएट्स सो मच अमाउंट ऑफ मोर I would say energy the moment Anna is around. So I think it just gave us that much more encouragement, and thank you Anna for being gracious to take the time out to be on the show. And I think as we progress, a momentous occasion, just today somebody sent me that this sport is becoming so popular for India एंड फॉर इंडियंस, क्योंकि ग्लोबली काफ़ी इंडियंस अभी माने जा रहे हैं इस स्पोर्ट के लिए. आज ही मुझे कुछ न्यूज़ आई कि देयर इज समबडी कॉल्ड अंशुल जुबली हु हैज़ वन द फर्स्ट UFC ग्लोबल चैम्पियन, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. एंड आई थिंक थ्रू दिस शो वन ऑफ दीज फाइटर्स विल श्योरली मेक to the global arena. So thank you very much, and like I said earlier, MX is very happy to be here. Absolutely. Thank you so much, sir. Can someone please pass the mic to Mr. Budwani, please? Do we have an extra mic there? So firstly, thank you for associating and for ideating such an amazing series. And like I read in your interview, you've always been into sports. You've always wanted sports to get the limelight. I want to ask you, हमें शो के बारे में एक टीजर से थोड़ा सा अंदाजा आ रहा है, but शो का फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या होने वाला है? Because we see that it's a reality show, and it's a reality MMA show, which for us is happening for the first time. So I would like to ask you, exactly शो का फॉर्मेट क्या है? Firstly, I'll thank everybody to come and cheer my dream. जो मैंने 4 साल हो गया मुझे, एक्चुअली 3 साल से तो MX से बात हो रही थी, और 1 साल पहले मेरा इसका स्ट्रगल शुरू हुआ था. जो मेरी टीम में शुजा, अली, हिमांशु गांधी, सुधीर, श्लोक, मेरी टोएम की टीम, और मेरे हमेशा मेरे साथ रहने वाले जिन्होंने मेरे से साथ किया और मुझ पे बिलीव किया कि ये शो अच्छा होगा और बहुत अच्छा बनेगा. वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ मेरा 4 साल हुआ. उसके बाद में शुरुआत में तो आई टेल यू, आई वाज गोइंग टू स्पीक, आई वाज स्पीकिंग टू पीपल दैट वी आर मेकिंग समथिंग लाइक दिस ऑन MMA, बट आई गेस इंडिया में MMA की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी क्रिकेट की है. सो आई वाज लाइक थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस दैट ये चलेगा नहीं, जाओ. सो एक दिन तो मुझे ऐसा हो गया, मैं सर पकड़ के ऑफिस में आके बैठ गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं MMA करूँ नहीं करूँ, बट अंदर से आवाज़ आई नहीं यार करेंगे हो जाएगा. सो इट गिव्स मी पंप. और उसके बाद में देन अन्ना
Thank you Anna for joining us and for supporting me. इतना एंड तक का हर चीज़ में डे टू डे बात करना इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का हैट्स ऑफ टू यू अन्ना फॉर दिस. इनका इनका स्पोर्ट के लिए लव है, ये इनका स्पोर्ट के लिए पैशन है जो यहाँ तक हमको यहाँ पर पहुँचाया है. इतनी अच्छी टीम हमारी बनी है. निखिल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. बट ऑब्वियस अर्नव, पंकज, वी हैड लॉट ऑफ फाइट वेर आई डू. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग. जो भी फाइट हुआ भूल जाना, शो बहुत अच्छा बना है. एंड देन थैंक यू खली जी, थैंक यू फोगट, मिस्टर फोगट, रितु फोगट स्पेशली सिंगापुर से ये शो को चेयर करने आई है, ये शो को सपोर्ट करने आई है. ये ही एक फाइटर है जो एमएमए की, जो यूएफसी 1FC में लड़ रही थी. उन्होंने वहाँ पर से 1FC में कॉन्ट्रैक्ट था कि कोई और शो को प्रमोट नहीं कर सकते, बट इन्होंने क्या कि मेरे इंडिया का शो, मेरे कंट्री का शो बन रहा है और उसके प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है तो मैं आओगी चेयर करने. तो स्पेशली सिर्फ ये शो को चेयर करने आई है. तो थैंक यू रितु आने के लिए. ऋषि, थैंक यू ओमकार फॉर मेकिंग अ बेस्ट शो. एंड वो ये तो शुरुआत है. मैं ये बोलूँगा मेरा सपना पूरा हो गया है, बट ये शुरुआत है. इसके बाद में और भी बहुत सीरीज आनी बाकी है. और वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो बाकी है अभी और. Absolutely. So that's all. Amazing. Thank you so much. Thank Thank you. you. And now I would come to our OG Anna, जिनके एंट्री पे ही तालियां बज गई. And who वेरी ऑनेस्टली जिनके एग्जिस्टेंस ने शो में 4 चांद लगा दिया है यार. उनका एक लुक, उनका स्टाइल, द वे ही सेड व्हाट ही सेड रियली मेड द शो सो स्पेशल. सो आई वांट टू आस्क यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल ऑफ दीज पीपल हु आर फाइटर्स? व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ द शो? I think too much to take home. The emotion, the struggle, what they want to achieve, the humble backgrounds that they come from. You know, that's the beauty of this show. Yeah. And hats off to Ali Bhai, the entire MX team, Arnab, Suresh, Pankaj. Like they said, that as much as the blood and gore you see here, you probably won't see blood there, but there was a lot of fighting that happened behind stage. You know, the entire team, Rishi's entire team, Andamol, unbelievable. We argued, we fought. What is the takeaway from this show? What are we taking home? What is the end user going to get? Fights, you've seen UFC, probably one of the biggest platforms in the world, one of the fastest growing sports in the world. I think could easily take on, football and cricket very, very soon. But it's not happening in India. So the challenge of these people, so the stories that had to be told were human stories. And that's the beauty of them. Each one of them, you know, you'll cry for them. There'll be tears of joy also when you see them win. But for me, all 16 of them, all 18 of them, you know, including the coaches, were like my own children. And I cried for each one and I clapped for the other one. Wow. So this is more about the human story and the beauty that exists in India. The love, the passion for sport, for anything new, it is India. And this also talks about an emerging India. You know, and that's why I always say my India is unstoppable. Whether it's sport, whether it's tech, whether it is finance, whether it's culture, anything. So I think this is that story. So a big thank you, Nikhil, Rishi, all of you. You know, Omi, I used to bug Omi all the time, call him all the time. नहीं यार Omi ये होना चाहिए. For the first time नहीं तो हमेशा सबको हमेशा लगता था कि ये इंटरफियर नहीं करते, लेकिन मैं बहुत इंटरफियर करता हूँ जब मुझे लगता है कि निखर के इन हीरो को आना है. You know, these boys are the heroes. I take inspiration from them. And today with Mahavir ji, probably the difference between India and any other place in the world is India. They talk about coaches. We have gurus. Wow, so तो well जब said. गुरु की एक दक्षिणा होती है और गुरु की ब्लेसिंग होती है और गुरु से ये शुरुआत होता है तो जीत तो guaranteed है. तो I'm not surprised that an Indian girl has already conquered the world of UFC. This is just the beginning, and hopefully this show will be the beginning. Khali bhai, you know, him coming here, one of the most lovable characters you would ever see. I call him my little gentle giant, you know, because he's probably the most humble
person you would ever meet. And that's exactly what we want. We want people like these, champions like these, to come forward and support this cause of supporting sport. That little champion there, you know, you see her fight and she inspires you. I see her on Instagram, I follow her on Twitter, and every time she does something, I go to the gym and try. I mean, I can't do it, but at least it inspires me. So thank you all for being there, and yeah, everybody associated. I think it's been tough. It's been highs, lows. To him for believing in it. You know, probably one of the only listed sporting companies in the world. A company to look out for. Wow. You know, a company that is going to change the future of sports in India. I say this because when you have it in you to spend Lakshmi, to spend money to build something, you know, where you don't know whether you'll ever recover that money, but when you have that in you, that's a champion. That's someone who believes कि नहीं यार मैं ऐसे खड़ा कर सकता हूँ और खड़ा करके रहूँगा. So I think with everybody's support and our champions, you know, I have to mention a whole lot of others who've been a part of it. I will, as I go forward, who've come forward to take care of every individual champion, like you said, who's here, to make sure that हर घर को ये लगे कि नहीं, अगर मेरा बच्चा ये स्पोर्ट में जाए तो उसे संभालने वाला भी है, घर चलाने वाला So भी well. है, you know, क्यों, वरना क्रिकेट हो या कुछ भी हो, पेरेंट्स को हमेशा ये डर लगता है कि उसके बाद क्या करेगा, शादी होगी नहीं होगी, घर कैसे चलाएगा. लेकिन अगर एक स्पोर्ट जिसमें आप बिलीव करते हो, जिसके बारे में आप बहुत ही पैशनेट हो, वो आपका घर भी चला सकता है और आपको वो नाम और शौहरत भी दे सकता है. नो बेटर. A lot of partners I'd like to talk about who agreed to be a part of their journey for probably lifelong. Thank you to all of them, but we'll talk. Thank you so much. Thank you.